Our today's class is for class 11th. Subject our is geology. The topic for today's class is the description of fossil pecten. So you have already understood the two shells, or we can say one of the shell, Trigonia of group, or we can say phylum, which is mollusca, and the class was Lamellibrancha. Same is here. The pecten, which is of class phylum Mollusca and class Lamellibrancha, the genus is now pecten. When we see the stratigraphical range or age of this fossil pecten, this remains almost from Carboniferous to present, or in some cases, in some books, there have been written that Cretaceous to present. And the age have been given in figures 0.62, 0.012 million years ago. So when we see the morphological features of this shell pattern, it is a subcircular, ovate shaped shell outline, bivalves, both two valves and both valves are of equilateral type, or we can say both valves are in, or they are inequivalves, but both valves are convex. In other words, we can say this is a biconvex shell. The umbo of this shell is straight. There is a straight umbo in this shell pattern, and which is prominent. It looks clear that there is an umbo in this shell which is prominent. Surface markings of this shell is either in the form of radiating ribs or sometimes concentric striae. The hinge line you see here is straight. The hinge line of this shell is straight hinge line with well developed ears. These two sided wings, we can say these are just like the wings or ears of this pecten shell. So they are well developed, they are easily prominent and seen. Concentric growth lines are also present. You have seen here the small lines on the surface of the shell. These lines are growth lines or concentric growth lines. We have also seen in other shells there are adductor impressions, either small or large, but in this shell there are large adductor impressions which help the animal or this fossil which is inside which there is an animal which help the animal in closing or in opening the valves of this shell. Pecten is a genus of large scallops, or we can say saltwater clams. If we see an example, Pecten asper is an example to understand easily what are the different features on this shell, morphological features, so that we can easily get understood its different features. If we try to understand in our simple language, जब हम बात करेंगे ये जो पैक्टन फॉसिल है, इसका जो फाइलम है वो मोलस्का है, क्लास जो इसका है लैमेलिब्रांचा है, जीनस जो है और बजात खुद पैक्टन फॉसिल है, इसका नाम जो है। जब हम एज की बात करेंगे कार्बोनिफेरस से लेके प्रेजेंट तक है, या इन सम बुक्स इट हैज बीन रिटन फ्रॉम क्रीटेशियस टू प्रेजेंट, जिसमें ये दिखाया गया है 0.6 से लेके 0.012 मिलियन ईयर्स एगो। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की जब हम बात करेंगे, ये जो शेल दिख रहा है हमारा सब सर्कुलर है, एक साइड से ओवेट टाइप शेल है, इसकी जो आउटलाइन दिखाई दे रही है। शेल बाइवॉल्व है, बाइकन्वेक्स शेल है या इक्विलेटरल भी
इसको हम कहते हैं। और जो वाल्व्स वो इक्विवाल्व होते हैं। इसका अम्बो जो है स्ट्रेट है, अच्छी तरह से प्रोमिनेंट है, दिखाई दे रहा है। इसकी जो सरफेस मार्किंग रेडिएटिंग रिब्स या कंसेंट्रिक स्ट्राइक कभी कभी होंगे विजिबल है इस शेल में। हिंज लाइन की जब हम बात करेंगे, हिंज लाइन बहुत ही स्ट्रेट है और प्रोमिनेंट भी है। इसके साथ साथ इस हिंज लाइन में वेल डेवलप्ड ईयर्स दो साइड में है, जिनको हम विंग्स भी कहते हैं, या ये ईयर्स होते हैं इस शेल में। एक खास फीचर पैक्टन में कन, इसमें और एक नई चीज़ है, ये छोटी छोटी लाइनें जो है ये ग्रोथ लाइन्स, इनको हम कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइन्स कहते हैं इस शेल। जब हम बाकी शेलों की बात करें, हर एक शेल में ये ग्रोथ लाइन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कभी कभी किसी किसी शेल में ये ग्रोथ लाइन्स जो है प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो मैंने बताया एडेक्टर इंप्रेशंस, जो जिसकी जो पहले लाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, इसके एडेक्टर इंप्रेशंस जो है बहुत ही बड़े एडेक्टर इंप्रेशंस है, जो शेल को हेल्प करते हैं क्लोज करने में या ओपन करने में। पैक्टन जो जीनस है ये ऑलमोस्ट बताने में आया है कि ये बड़ा ही सॉल्ट वाटर एक एनिमल है, जो शेल है इस समंदर के अंदर सॉल्ट वाटर, स्पेशली जो आपको मालूम ही है ये जो शेल्स है सॉल्ट वाटर सैलाइन वाटर में पसंद करते हैं, और शैलो इन लेक्स में या शैलो वाटर बॉडीज में ये रहना पसंद करते हैं, स्पेशली विच आर वेरी कोल्ड वाटर, इस एटमॉस्फेयर को ये लाइक करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द शेल जिसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं पैक्टन एज पर, जिससे हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं what are the different morphological features of this shell pecten. So this was almost all about regarding the morphological features of this shell pecten.